सृचा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको घुमाने लेके जा रही हूँ मिशिगन में ही एक अट्रैक्शन है, ये है सू लॉक्स। और यहाँ से है 1 घंटा की दूरी पे, 1 घंटा है, तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा वहीं पे आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स सही बोलूँ मुझे बहुत पता नहीं है, एकदम रैंडम ही प्लान बना। लेकिन चलिए फिर आज देखते हैं सू लॉक्स। Pihu and Shivans are sitting behind. Shivu! In 3rd grade, I learned about Soo Locks because we were learning about Michigan history. So we learned about Soo Locks, and that day when we learned about Soo Locks, I'm like, Mom, we need to go there. It's amazing. सही बोल रही है। हम लोग ना ये जो सू लॉक्स वाला जो है ये बहुत टाइम से पीछे पड़ रही थी, तो हम सोचे कि इसको इस बार कवर करते हैं। तो बस चलिए वहीं पहुंचते हैं। सी यू देयर, बाय बाय। Bye. शिवू बाय। So I know a lot about Soo Locks. अभी हम हैं मैकिनेक ब्रिज पे, और ये जो ब्रिज है ये 5 माइल्स का है, ऑलमोस्ट लाइक 8 किलोमीटर्स। और ये वर्ल्ड के बेस्ट ब्रिजेस में से एक है। और कल हम जब मैकिनेक ब्रिज घूमने गए थे, मैकिनेक आइलैंड गए थे, तो हम यहीं से फेरी से गए थे आइलैंड तक। And did you know that bridge connects 2 whole peninsulas together? राइट, ये जो ब्रिज है मैकिनेक ब्रिज, ये अपर पेनिनसुला और लोअर पेनिनसुला को कनेक्ट करता है। 8 माइल्स का है, 5 माइल्स का है, 8 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। और ये बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए। ये वही फेरी है स्टार लाइन जिससे कल हम मैकिनेक आइलैंड गए थे। And see the bridge. It would have been so hard to make a bridge above water, right, Daddy? No, it's very difficult. बहुत सुंदर है ये। हम आ गए हैं सू लॉक्स में, और ये पैसेज वे है फॉर द शिप्स फ्रॉम लेक सुपीरियर टू लेक हुरॉन। This is the world's largest parallel locking system that resolves the 21-foot variance between Lake Huron and Lake Superior. हमने ये जो बोट टूर लिया है ये अप्रॉक्स 2 आवर्स का होने वाला है। हम लोग सू लॉक्स आ गए हैं, और ये देखिए पीछे कनाडा दिख रहा है। और हमारी जो बोट है, हमने बोट का टिकट्स ले लिया है, और वो जो बोट है वो हमको लेके जाएगी, सू लॉक्स का जो पूरा प्रोसेस है वो बताएगी, और वो कनाडा वाटर से लेके फिर यूएसए में छोड़ेगी। और मेरे साइड में म्यूजियम है। अब मैं आपको टिकट चार्जेस की इंफॉर्मेशन देती हूँ। पर पर्सन टिकट इज़ $33, और जो बच्चे एज ग्रुप 5 to 16 ईयर्स में आते हैं उनका टिकट $13 है, और जो बच्चे 4 साल या 4 साल से छोटे हैं उनका $1 है। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको एडल्ट और यूथ टिकट्स पे $3 का डिस्काउंट मिलेगा। Gallons of water to raise a vessel up to Lake Superior in that lock. We also have 2 decommissioned locks on the other side of the pier. The first one that we see is the Davis, opened in 1914, and the Sabin beside it, opened in 1990. You'll see the winter
Anywhere from 1 to 5 feet wide. The Soo Locks have been referred as one of the largest and busiest waterway traffic systems in the world. बड़े बड़े शिप्स को लॉक के थ्रू पास होते हुए देखना बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था. And then on the safety boom off to the right, you'll see that big steel cable underneath that stuff. Just past the gate, you'll see a V-shaped object. This is where a large pin is driven into that horseshoe object. No, my daughter. That's okay. I don't think she'll hear us. Yeah. That is getting upper and upper. You see closely. Oh my gosh, are we gonna touch over there? No, Shivansh. Bait, which was coke, tackling iron ore pellets, and molten crushed limestone. And they do all of that over there at the steel plant, and the end result is the rolls of steel coil. They weigh anywhere from 20,000 to 70,000 pounds apiece, and they cost about 10,000 to 100,000 depending on the type of steel they are. So that's pretty much the gist of it over there. Other than actually seeing some of the piles of cargo and the actual unloading bridges and stuff like that, the conveyor system. That's the gist of it. Now the gates ahead of us are opening. And then we'll get on our way. When we exit the lock here on the right hand side, you're going to see a lot of the work.
her a little more versatile to go into various ports, so she can kind of just nose in there and swing the boom out and unload instead of having to tie up various things like shoreline crossing over, fishery gear, other things. Fishing is very popular here in the Sault Ste. Marie area. Back in the 1600s, a park which includes an extended walkway along the river shoreline. They also have the Bondar Marina up here. And then there's also an office building behind here. That's a Roberta Bondar place. So Roberta Bondar sounds pretty important. She was Canada's first female astronaut, and she's a native of Sault Ste. Marie, Canada. She spent 8 days in space after flying on the Space Shuttle Discovery in January 1992. As well as a complete history of the Canadian Forest Fire Service. The firefighting seaplanes were first used in 1924. Thank you. Thank you.